हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम टू द अनअकैडमी यूट्यूब मैकेनिकल चैनल। कैसे आप सभी लोग? मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी गेट एमई यूट्यूब चैनल पर। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग वेल। आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो माय डियर, अब हमारे सेशन में आज हम करने वाले हैं टेस्टिंग ऑफ द आईसी इंजन। तो गाइस जल्दी से सभी लाइव आ जाइए, फिर हम हमारे क्लास को स्टार्ट करते हैं। यस, यस, या होपफुली ये जो आपकी जो क्लास है ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल हो रही होगी, क्योंकि लास्ट टाइम में अगर हम चीजों को बहुत ही कम ड्यूरेशन में रिवाइज करते हैं तो वो हमारा एक क्विक रिवीजन होता है। और विद द हेल्प ऑफ दीज क्लासेस मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आप अपने शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर लीजिए। गुड इवनिंग थानोस एंड प्रभास, हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सभी लोग? अक्षय कुमार दास, वेरी गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? सो स्टूडेंट्स जो ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज hit the like button and mark your attendance and mark your attendance and mark your attendance. Yes my dear. Now अब हम हमारी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं और जो स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं मैं उनको वापस कहना चाहता हूं, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। अटेंडेंस देना बेहद ही जरूरी है। सो इट शुड बी योर हैबिट। जैसे ही आप क्लास में आते हैं, जैसे ही आप क्लास में आते हैं, आपको सबसे पहले अटेंडेंस देना है। क्या देना है? सबसे पहले अटेंडेंस देना है। So guys, please be a part of this mission today, that is mission GATE and ESE 2021 and 2022. This is our India's best faculty, India's best educator on a single platform, that is the Unacademy GATE Mechanical ME. One step solution for all mechanical engineering examination. One step solution for all mechanical engineering examination. So Devendra sir is teaching you the fluid mechanics. Prakar sir will teach you the industrial engineering and operation research or maybe fluid machinery. Pallav sir will teach you engineering mathematics. Survey sir will teach you production engineering. Alok sir is teaching you the design of machine elements. And Alan Sharma will start your subject ESE Prelims Ethics. He is teaching you on the Critics YouTube channel, and after that he will come on this YouTube channel and will start teaching you the ESE Prelims non-technical portion. Very good evening Sanjay, Danish, Dilshad, Tejapani. And Approve sir is teaching you the strength of material, and strength of material is completed. And आज सुबह ही हमने आपको एक सरप्राइज दिया था। सभी फैकल्टीज ने आपको मे के जो भी प्लान हैं वो सभी बताए थे कि वो अब कौन से सब्जेक्ट्स आपके सामने लेने वाले हैं। Amit sir is teaching you the industrial engineering and operation research, and maybe it will be completed soon. Good evening Hemlata. And I am also teaching you the IC engine crash course, and in the month of the May I will teach you RAC and power plant crash course. So also we have launched a course for the UPPSC AN, NLC, SSC Zayan and Vizag Steel. So this will be like a crash course on mechanical engineering, and this will be our schedule for the May month. Up to the 10th of the June, the syllabus of this all examination will be completed. ये सभी एग्जाम का सिलेबस कंप्लीटेड हो जाएगा, एंड हम आपको वहां पर पढ़ाएंगे हिंदी में, एंड मटेरियल विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन द इंग्लिश. Student who want to join this course, they can use my referral code Vishal11 in order to get the 10% instant discount. Yes, क्रैश कोर्स की क्लासेस यहाँ पर आपके जो हमने बात की है आरएसी और पावर प्लांट का, ये इसके जो क्रैश कोर्स की जो क्लासेस होगी, इसका क्रैश कोर्स आपको YouTube पर मिलेगा और इनकी डिटेल्ड क्लासेस आपको अनअकैडमी प्लस पर मिलेगी. एंड अलोंग विद दिस मैं स्पेशल क्लासेस में आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा रहा हूं. ठीक है? सो दिस इज अबाउट मी. इफ यू वांट टू जॉइन द अनअकैडमी, यूज माय रेफरल कोड. Very good evening Abhay, how are you? Very good evening Abhay. So why to join the Unacademy Plus subscription? So there will be daily live session on the fixed time. Okay, content will be strictly based on the syllabus.
We will leave no stones unturned. Get guidance under the India's best teacher. Crash course will be there. Cover entire syllabus much before the time ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर पाओ. उसके बाद अगर हम बात करते हैं, lectures will be in both English and Hindi. No doubt will be left unsolved. Fourth class will be the doubt session. Accessible on laptop, computer and phone. Weekly test series and doubt session are there. जैसा मैंने यहाँ पर आपको बताया है. Test series also available. तो जिससे आप टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हैं. सो गाइस, जितने भी अभी स्टूडेंट आ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस फर्स्ट. अपनी अटेंडेंस दे दीजिए फटाफट, अपनी अटेंडेंस दे दीजिए. ठीक है, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस फर्स्ट. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास. कल हमने एक पॉइंट पढ़ा था लास्ट में, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. तो वो क्या है देख लीजिए. जो आपका डुअल साइकिल होता है, जो आपका डुअल साइकिल होता है, उसका डायग्राम कैसे बनता है देखिए. उसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने बता दिया था. डुअल साइकिल का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, और वहां मैंने कमेंट में पिन भी कर दिया है कल की क्लास का. ठीक है, ये डुअल साइकिल है. ये स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है, लेकिन एक्चुअली दीज आर द कर्व्स. ये आपके कर्व हैं. ठीक है, दिस इज योर पॉइंट 1, दिस इज योर पॉइंट 2, दिस इज योर पॉइंट 3, मींस स्टेट 3, स्टेट 4, स्टेट 5. so this is your dual cycle in which heat addition will be takes place at the constant volume first, and after that heat addition will takes place at constant pressure. प्लस पर आईसी इंजन अभी चल रहा है अमिया कुमार नायक, प्लस पर आईसी इंजन चल रहा है. Sir, can 2+ student attend this? Yes, Kunal, you can message me on the Facebook. I will tell you each and everything. Kunal Sharma, आप मेरे Facebook पेज पर मुझसे कनेक्ट होइएगा www.facebook.com/Vishal इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई डाउट होता है, मैं उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि किस तरीके से आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है. ओके कुणाल. सो यहाँ पर 5 प्रोसेस होते हैं. कितने प्रोसेस होते हैं माय डियर? 5. अब देखिए, यहाँ पर मैं एक रेशियो की बात करता हूँ कि क्या क्या रेशियो होता है. देखिए, ये है आपका P2, ये है आपका P3, और देखिए ये आपका V2 इज इक्वल्स टू V3, और वो है आपका बेटा V4, और ये है बेटा आपका V5 इज इक्वल्स टू V1. कल हमने अल्फा बता दिया था एक्सप्लोजन रेशियो को. आपके आईसी इंजन की क्लासेस प्लस पर चल रही है. ठीक है, उसका 6 आवर का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, और मतलब 25% हो चुका है. अब आपका 75% बाकी है. आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं. अमिया कुमार नायक, सर कैन आई हैव योर नंबर? आप मुझे फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं अमिया. ठीक है, आप मुझे फेसबुक पर कीजिए. प्रभाकर नमस्कार. चलिए अब पढ़ते हैं, बातें बहुत ज्यादा हो जाती है, हमने बातें लंबी हो जाती है. ये चीज लास्ट में रिजॉल्व करेंगे. ठीक है अमिया, यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू द फेसबुक पेज fb.com विशाल अनअकैडमी. अब देखिए, यहां पर देखिए, फटाफट देखिए, फटाफट देखिए. कल हमने बात की थी अल्फा की. वो अल्फा आपका एक्सपेंशन रेशियो नहीं होता, इट इज द एक्सप्लोजन रेशियो. इट इज द एक्सप्लोजन रेशियो. एक्सप्लोजन रेशियो क्या होगा देखिए, P3 डिवाइड बाय P2. ठीक है, और ये 3 to 4 होता है आपका कट ऑफ रेशियो. सो व्हाट इज रो? रो इज कट ऑफ रेशियो. थोड़ा सा प्रीवियस क्लास का हम देख लेते हैं, और फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं. दैट इज V4 डिवाइड बाय V3. और जो आपका 4 to 5 प्रोसेस में यहां पर आपका एक्सपेंशन रेशियो होता है. व्हाट इज एक्सपेंशन रेशियो? एक्सपेंशन रेशियो इज RE, which is equals to V5 डिवाइड बाय V4. और कंप्रेशन रेशियो क्या होगा बताइए? कंप्रेशन रेशियो क्या होगा सर? कंप्रेशन रेशियो विल बी स्टिल V1 डिवाइड बाय V2. V1 डिवाइड बाय V2. तो ये चीज मार्क कर लीजिएगा, अल्फा इज द एक्सप्लोजन रेशियो, नॉट द एक्सपेंशन रेशियो. सर आईसी इंजन में क्लास 12th में ही पढ़ लिया था फॉर जेईई प्रिपरेशन. वेरी गुड. देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द आईसी इंजन. सो टुडेज आवर टॉपिक इज टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक.
testing and performance of IC engine. टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन। माय डियर, अभी मैं एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बताता हूं। देखिए, दिस इज योर सिलेंडर, ये आपका सिलेंडर है और इसके अंदर है आपका पिस्टन, इसके अंदर है आपका पिस्टन। इस सिलेंडर से आपकी कनेक्टिंग रोड कनेक्टेड है लाइक दिस इज द कनेक्टिंग रोड, दिस इज योर क्रैंक, और इस क्रैंक से आपकी क्रैंक शाफ्ट कनेक्टेड है। सो दिस इज द आउटपुट शाफ्ट, ये आपका आउटपुट शाफ्ट है। और क्रैंक रोटेट करता है इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। दिस इज योर आउटपुट शाफ्ट। माय डियर, V2 डिवाइड बाय V1 कैसे होगा कंप्रेशन रेशियो? वॉल्यूम बिफोर द कंप्रेशन टू द वॉल्यूम आफ्टर द कंप्रेशन, इट विल बी V1 डिवाइड बाय V2 अमित, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो की बात कर रहे हैं। जो आपका पिस्टन है ये, अब यहां पे ध्यान से सुनो, प्लीज फोकस ऑन दिस, प्लीज फोकस ऑन दिस, प्लीज फोकस ऑन दिस। यहां पर देखिए, द पावर अवेलेबल इन द कंबशन चेंबर और अबाउट द पिस्टन, यहां पर जो आपको पावर अवेलेबल होती है जिसके कारण आपका पिस्टन पावर स्ट्रोक में डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश होता है, इस पावर को हम कहते हैं इंडिकेटेड पावर। द पावर अवेलेबल एट द पिस्टन इज नोन एज इंडिकेटेड पावर। हाय सुजल, सो व्हाट इज आईपी? सर, आईपी इज इंडिकेटेड पावर, IP is indicated power, ठीक है। The power available at the piston and the power loss due to the friction in different engine components is known as a friction power. What is FP? So FP is friction power. FP is friction power. Okay, due to the friction there will be loss in the power in the form of the heat, and power available at the output of the shaft, power available at the output of the shaft is less as compared to the indicated power which is available in the piston. So here the power available will be known as a brake power, which is less than indicated power, because when this power is transmitted from this point to this point to this point to this point, there will be loss of the power due to the friction. Therefore indicated power will be decreases and we will get the brake power at the output shaft. So therefore what is BP? Sir, BP is not a blood pressure, it is a brake power. It is a brake power. Why it is a brake power? Because we will measure this power by applying the brake, and now from the machine design, what is the function of brake? The function of the brake is to retard the motion or make the component in a rest condition. To make the component in a rest condition. Sir, I am Pritam. Yes, Pritam. Yes, Pritam. So guys, those who are taking classes, please hit the like button first. Please hit the like button first. I have not to say this again and again. ये आप में हैबिट होना चाहिए, ठीक है। आपको मजा आना चाहिए लाइक करके, ठीक है। And because of this like, this video will be saved in your playlist, so you do not need to search. So my dear, this brake power is less than the indicated power. Let's take an example. If you are having a power of suppose 20 kilowatt at the piston and there will be loss of the power in the friction, say this is the 2 kilowatt, then how much power will be received at the shaft? So this will be 18 kilowatt. So which means this 18 plus 2 will be equals to the 20, which means brake power plus friction power will be equals to indicated power. So how to determine this power? This indicated power is determined by the indicated diagram. Indicated diagram.
With the help of the actual PV diagram, you will determine the indicated power. With the help of the actual PV diagram, you will determine the indicated power. Now, this friction power and brake power will be determined the different methods. Now, we are going to study what are these different methods. Before going to different testing methods, now I will tell you the arrangement of the flywheel size, which is very important. Arrangement, flywheel के size का arrangement, arrangement of flywheel size, arrangement of flywheel size. My dear, the size of the flywheel for spark ignition engine is always less than the compression ignition engine, because compression ratio will be more, power will be more. If the power will be more, then the flywheel size will be more. And in case of the 4-stroke, it will be more than the 2-stroke. So with the help of these two, you can arrange the size of the flywheel. So किसका flywheel का size सबसे बड़ा होगा? सर 4-stroke का होगा, बट इन 4-stroke किसका होगा? सर CI इंजन का. आफ्टर दैट सर 4-stroke का ही होगा, बट आफ्टर दैट SI इंजन. उसके बाद 2-stroke का होगा, लेकिन 2-stroke में किसका होगा? CI इंजन का. आफ्टर दैट 2-stroke में किसका होगा? SI इंजन का. So this is the arrangement of the flywheel size in the decreasing order. In the decreasing order. So where we will use the 4-stroke CI engine? In trucks and buses. ट्रक्स और बसेस में ये यूज में लिया जाता है. 4-stroke SI इंजन सर ये कार्स में यूज में लिया जाता है. 2-stroke CI इंजन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है. Naresh Vatik Koti, this is a IC engine crash course, my dear. Okay, so I cannot deliver you the IC engine of the 40 hours subject in only 5 to 6 hours. So you have to think about that. I will give you just the important points which are relevant from the examination, and they are the expected question. Okay, Naresh. So for detailed course, you have to wait for some time. Okay, Naresh. So 2-stroke CI engine कहाँ यूज में लिया जाता है? You have to give your answer in your chat box. And 2-stroke SI engine कहाँ यूज में लिया जाता है? सर ये यूज में लिया जाता है मोपेड्स में और स्कूटर्स में, चेतक. Okay, so this 2-stroke CI engine is, yes, it is used in marine engines or your ship engines are the 2-stroke CI engine. Now my dear, let's understand something which are very important. Now, what are the basic idea of transformation of energy? My dear, you will get indicated power where? आपको indicated power कहाँ मिलता है? Sir, this indicated power we get on the piston. हमें ये piston पर मिलता है. Due to the friction, the power will be reduces and we will get the brake power on the shaft. So this is the power available on the shaft. From where we will get the indicated power? We will get the indicated power due to the heat addition per second. This heat addition per second is mass flow rate of the fuel into calorific value of the fuel. So this is the energy transformation chart, my dear. You will burn the fuel and this heat addition will be converted into the indicated power, and if this indicated power will be transferred to the shaft, and because of the friction this power will be decreased and we will get the brake power only. Now my dear, the relation between the indicated power and the brake power is what? It will be defined with the help of the mechanical efficiency, which is the ratio of brake power to indicated power. With the help of the mechanical efficiency, there are the different type of efficiencies. Yes, Naresh, we will consider this.
So there are the different type of efficiencies which you have to consider. So please be focused on your screen. The relationship between indicated power and the brake power is given by the mechanical efficiency. Okay, and now we are going to find out the other two efficiencies. वो क्या क्या होता है देखो, वो क्या क्या होता है देखो. First one is what? Sir, first one is your brake thermal efficiency. BTH means B means brake, TH means thermal. B means brake, TH means thermal. So brake thermal efficiency is the ratio of brake power divided by heat addition per second. Brake power divided by heat addition per second. Now come to the indicated thermal efficiency. It is very simple, my dear. If brake thermal efficiency is brake power divided by heat per second, so indicated efficiency will be the indicated power divided by heat addition per second. Indicated power divided by heat addition per second. Clear hai? Say yes or no. Yes, it is clear. Now come to the some specific quantities. ठीक है. Suppose we are going to find out some specific quantities. Some specific quantities. I will give you the example. Suppose this is y x. Y specific x. So this value will be equals to what? Y specific x. Okay. Let's take an example. Brake specific fuel consumption. So x, y is what? Brake. X is what? Fuel consumption. So it is like that. Brake specific fuel consumption, indicated specific fuel consumption, weight specific fuel consumption, brake specific weight, weight specific brake, anything which means y specific x, y specific x. So what is this? Brake specific fuel consumption. Brake specific fuel consumption इसको कैसे लिखा जाता है? It will be equals to x divided by y, which will be after the specific, it will be in the numerator and this will be in the denominator. So this value will be equals to, sir, fuel consumption divided by brake power. Say yes or no. Fuel consumption divided by brake power, which is after the specific, it will be in the numerator. ठीक है, it will be above this divide sign, and before the specific it will be in the denominator. It will be in the denominator. Okay, so it will be in the numerator, it will be in the denominator. So this will be in the numerator and this will be in the denominator. So this will be in the numerator and this will be in the denominator. Let's assume I tell you indicated specific fuel consumption. Indicated specific fuel consumption. So what will be the definition of indicated specific fuel consumption? So this will be the fuel consumption divided by indicated power. Simple. Fuel consumption divided by indicated power. Say yes or no. Say yes or no. Now my dear, why we are going to do the testing our engine? Because my dear, we want to decrease the friction power. We cannot control the indicated power. हम इंडिकेटेड पावर को कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज इट इज द पावर इनसाइड द इंजन. We can control only the power which is in our hand, that is the brake power. If we decrease the friction power, brake power will be increases. If the brake power will be increases, mechanical efficiency will be increases. If the brake power will be increases, brake thermal efficiency will be increases. And what about the brake specific fuel consumption? What about the brake specific fuel consumption? So this is the fuel consumption divided by brake power. Fuel consumption divided by brake power. If brake power will be increases, then the brake specific fuel consumption will be decreases, and because of that economy will be increases. Because of that economy will be increases, because economy is directly proportional to 1 by brake specific fuel consumption. If the fuel consumption will be decreases, economy pocket friendly will be it will be pocket friendly. Yes, fuel consumption divided by indicated power, right Madan Mohan?
Now, my dear, now you will enter into the testing of the IC engine. The main aim of the testing of the IC engine is in order to reduce the friction power so that we can get the maximum brake power. And if the mechanical efficiency of the engine will be increases, I can say that performance of the engine will be increases. So our main aim is to increase the performance of IC engine. Our main aim is to increase the performance of IC engine. Very good, my dear. Very good. Now the first testing method, it is very important. First testing, मैंने क्या कहा, रेसिप्रोकल तो हुआ, it is directly proportional to 1 by BFSC. मैंने ऐसे थोड़ी कहा directly proportional to BSFC. ओके, रेसिप्रोकल है देखो. Now देखो यहाँ पे, the first method is Whelan's line methods. The first method is Whelan's line method. Whelan's line method. Whelan's line method. My dear, in this method, what will we do? We will plot a graph between the fuel consumption and the brake power which I received on the shaft. Where do I receive the brake power? I receive the brake power at the shaft. I receive the brake power at the shaft. So in this method, what will I do? I will plot a graph between the mass flow rate of the fuel consumption to the brake power. Fuel consumption to the brake power. Okay, my dear, now let's understand this. So there is a graph. So this is the graph. Okay, this is your graph. यहाँ देखो सभी. This is your graph. Okay, so here will be the fuel consumption and here will be the brake power. Fuel consumption and brake power. Now, my dear, this fuel consumption may be in the kg per hour, may be in the kg per second, but this is the fuel consumption. Okay, let's see. Now, what will happen if the fuel consumption rate will be increases? Then what will happen? Suppose the fuel consumption rate is this. Will the engine will run? No. I have to increase the fuel consumption. So this is the fuel consumption. Engine is still not running. This is the fuel consumption. Engine is still not running. This is the fuel consumption. Engine is still not running. Why? Why, my dear? I am supplying the fuel, but engine is not running. It will require a minimum amount of fuel in order to overcome the friction so that I will get the brake power. I will get the brake power. So after this, the engine will start the giving brake power. The engine will start giving the brake power, but beyond this mass flow rate of the fuel, engine will not give the brake power because it has to overcome the friction, and this much amount of fuel is not sufficient to overcome the friction. So in order to overcome the friction, I have to supply this much amount of the fuel. This much amount of the fuel. Now, my dear, as the mass flow rate of the fuel, as the consumption of the fuel will be increases, the brake power will be also increases. The brake power will be also increases. Say yes or no. Are you getting my point? Are you getting my point? Why this is curved like this? Why this curve is like this? समझ आया ये? So this much amount of fuel is required to overcome frictional power. So this much amount of fuel will be required in order to overcome the frictional power. So let's say this is m dot f naught. Now what will happen if I extend this graph on the negative brake power? If I extend this graph on the negative axis, then I will get a negative brake power. So what is this? So this is the frictional power. What is this? So this is the frictional power, which is the negative brake power. This is the frictional power which has to overcome. When the fuel is supplied
this frictional power will be decreases, this frictional power will be decreases, this frictional power will be decreases as the fuel supply is increased, this frictional power will be decreases and become zero. And after that, if I increase the mass flow rate of the fuel, then you will get some brake power, you will get some brake power. Here my dear, the relation between the mass flow rate of the fuel and the brake power is linear relation, is a linear relation. Okay my dear, it is a linear relation. So how can we define this linear relation? Y is equals to mx plus c. What is m? Sir, m is the slope, so this is the theta and tan theta is slope, tan theta is slope. Okay my dear, so this is y. What is y? Y is the mass flow rate of the fuel equals to what is m? Let's say m is the slope, which is lambda. Let's take it as a lambda. Let's take it is a lambda plus x. What is x? X is the brake power. What is x? X is the brake power plus c. What is c? Sir, c is the mass flow rate of the fuel required to overcome the friction. Required to overcome the friction. So this is the equation of Wheelen's line method. So how the question will be asked? How the question will be asked? In Wheelen's lines method, the graph is plotted between mass flow rate of the fuel and the brake power. In Wheelen's line method, if we extend the slope, if we extend the line at the negative brake power axis, what will it represent? It will represent the friction power. Wheelen's line method can be used for which type of engine? It can be used for petrol engine. It can be used for petrol engine as well as it can be used for diesel engine. As well as it can be used for diesel engine. For both engine it can be used. Now my dear, it can be used for the 4-stroke also and it can be used for the 2-stroke also. Now my dear, it can be used for the single cylinder and it can be also used for the multi cylinder. ये दोनों के लिए यूज में लिया जा सकता है. There is no limitation for the Wheelen's line method. Now my dear, ये यूज क्यों किया जाता है? Wheelen's line method से हमें क्या मिलता है? My dear, Wheelen's line method से हमें जो सबसे पहली चीज मिलती है, that is the mass flow rate of the fuel in order to overcome the friction. What will I get? Mass flow rate of the fuel in order to overcome the friction. Second thing is that frictional power. If I get the frictional power, I can get the indicated power by adding this frictional power with the brake power. If I get the indicated power, then I can calculate the mechanical efficiency, which is the ratio of brake power divided by indicated power. Brake power divided by indicated power. Brake power divided by indicated power. So these are the results which can be found with the help of the Wheelen's line method. घुसा ये दिमाग में? समझ आई ये बात? ये बात समझ में आई सबको? Very good, my dear. Now come to the next point. To know the minimum amount of the fuel required to start the engine. Yes, Chanchal, very good, very good, very good. Now come to the next method. And it is a very, very important method, my dear. Very, very important method. That is the Morse key test. Morse key test. Morse key test. Morse key test. Yes, yes, Morse key test. Morse key test. Morse key test. M for Morse, M for multi-cylinder engine. I will tell you why it is used for the multi-cylinder engine, but you have to remember this first. It will be used for multi-cylinder engine only. It will be used for multi-cylinder engine only, which means number of cylinder, which means minimum number of cylinder will be equals to what? Minimum number of cylinder will be equals to what? मिनिमम नंबर कितने चाहिए हमें सिलेंडर के फॉर द मोर्स की टेस्ट, फॉर द मोर्स की टेस्ट. नाउ माय डियर,
First I will draw the multi-cylinder engine, then I will give the explanation of this question. Okay, how the question will be asked, question कैसे पूछा जाएगा. Okay, how the question will be asked, question कैसे पूछा जाएगा, question कैसे पूछा जाएगा. Okay, so this is your first engine, first cylinder. Okay, this is your second cylinder, this is your fourth cylinder, this is your fourth cylinder. Okay, so 1 2 3 4, 1 2 3 4, there are the four cylinders. Suraj Sharma 8, minimum number of cylinder 2, minimum number of cylinder 2, very easy my dear, minimum number of cylinder 2, 2 will be the multi cylinder na, 2 will be multi cylinder, so minimum number of cylinder should be 2. Minimum number of cylinder should be equals to 2. So what will happen, if the fuel will be burned here, you will get the indicated power in first cylinder, you will get the indicated power in second cylinder, you will get the indicated power in third cylinder, you will get the indicated power in fourth cylinder. So total indicated power will be equals to what? So total indicated power will be equals to indicated power 1 plus indicated power 2 plus indicated power 3 plus indicated power 4 plus indicated power 4. 8. 8 plus indicated power 4. All these piston cylinder are connected with the crank. So this is your crank. I am drawing a common crank. Okay, so this is the common crank and you are getting the mechanical power. You are getting the mechanical power at the output of the shaft, which is known as a brake power. Which is known as a brake power. My dear, this is your brake power. This is your brake power, and the amount of lost energy during this transfer of this energy is the friction power. So I am taking the all friction power of this 4-cylinder engine. Rakesh Guzala, as we know, 30% to brake power, 30% to cooling, 30% to exhaust, 10% to friction. Then where are the heat energy and exhaust energy factors in the indicated power formula? मैंने बताया ही नहीं कि आपको indicated power कैसे calculate करनी है. Okay, Rakesh, I didn't tell you the method of the calculating of the indicated power. Even I did not tell you the pumping losses also. There are also pumping losses. Okay, I am just saying that indicated power will be calculated with the help of the indicated diagram. But indicated power calculated with the help of the indicated diagram is different as compared to the actual indicated power, because some factor has to be considered that you mentioned in your this message. Okay, so we will consider all these things. Okay, but here we will not consider. Okay, here we are going for the crash course. So I will give you just a brief introduction of this all tests. IP is IP1 plus IP2 plus IP3 plus IP4. So this is the total indicated power, and this indicated power is the summation of frictional power and the brake power. Frictional power and the brake power. Now what will I do? अब मैं क्या करूंगा, एक एक करके इंजन को कट करूंगा, इंजन को कट करूंगा, इंजन में जो आपका फ्यूल का बर्निंग हो रहा है उसको बंद करूंगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में क्या होगा, सभी 4 सिलेंडर्स में आपका फ्यूल का बर्निंग होगा. मैं ब्रेक पावर को कैलकुलेट करूंगा. सभी 4 सिलेंडर्स में फ्यूल का बर्निंग होगा, मैं ब्रेक पावर को कैलकुलेट करूंगा. आफ्टर दैट मैं क्या करूंगा, फर्स्ट सिलेंडर को कट करूंगा, फिर सेकंड सिलेंडर को कट करूंगा, फिर थर्ड को करूंगा, फिर फोर्थ को करूंगा. अब मैं क्या करता हूं, पहले फर्स्ट सिलेंडर को कट करता हूं. फोर सिलेंडर 1, फोर सिलेंडर 1. अगर मैं पहले सिलेंडर को कट करता हूं, इसमें फ्यूल को नहीं बेचता हूं, फ्यूल को बर्न नहीं करता हूं, then what will be my indicated power? See, this will be IP2, IP3, IP4. So indicated power when the first cylinder is cut, that will be equals to cylinder 1 is cut, then this value will be equals to indicated power of 1 plus indicated power of 2 plus indicated power of 3. अरे 2 कहां से आ गया, 2 plus 3 plus 4.
नाउ अगर मैं यहां पर फ्यूल की सप्लाई को कट कर देता हूं तो देखिएगा द ब्रेक पावर विल बी डिक्रीज. नाउ दिस ब्रेक पावर विल बी डिक्रीज. So what will be the brake power? Sir, this brake power will be the BP1. ये BP1 होगा. This value will be equals to what? Sir, indicated power of 2 plus indicated power of 3 cylinder plus indicated power of 4 cylinder minus of frictional power. ऐसा थोड़ी ना है कि अगर मैं इसमें फ्यूल की सप्लाई नहीं करूंगा तो ये पिस्टन अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट नहीं करेगा. ये अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट करेगा और इसको मूवमेंट करवाने के लिए पावर कहां से लेगा? ये रिमेनिंग इंजन से लेगा. ये रिमेनिंग इंजन से लेगा. So when the first cylinder will be cut, the brake power is measured. BP1 will be equals to IP1 plus IP2 plus IP3 plus IP4 minus of frictional power. And we know that total brake power is equals to what? So total brake power is equals to IP1 plus IP2 plus IP3 plus IP4 minus of frictional power. अब देखिए this is your equation A, this is your equation B. So equation A minus B, or what will you get? IP2, IP3, IP4, IP2, IP3, IP4 will be cancelled out. Frictional power will be cancelled out. Then BP1 and BP, you will get here BP minus BP1. So this value will be BP minus BP1 will be equals to sir indicated power of 1. Indicated power of 1. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. Now let's take an example. एक एग्जांपल से समझते हैं तब आपको ये समझ में आएगा. देखो. Now let's take an example. Let's take an example. If all cylinders are fired, you are getting brake power equals to 3037 kilowatt. Okay, now what I am going to do, cylinder 1 is not fired. Cylinder 1 को हमने फायर नहीं किया. Then you will get the BP1. When cylinder 1 is not fired, this value will be equals to 2102 kilowatt. After that what will I do? Cylinder 2 is not fired. जब cylinder 2 fired नहीं होगा, remaining will be fired 1, 3 and 4. When the cylinder 2 is cut off, then the cylinder 1, cylinder 3 and cylinder 4 will get the mass of the fuel and the fuel will be burned inside the cylinder. So the brake power 2 will be equals to what? Let's take an example again. 2102 kilowatt. Now if the cylinder 3 is not fired, you will get the brake power 3. When the cylinder is 3 not fired, that will be 2100 kilowatt. 2100 kilowatt. Now when the cylinder 4th is not fired, you will get the brake power 4 will be equals to 2098 kilowatt. 2098 kilowatt. Now my dear, what is the indicated power 1? Sir, indicated power of first cylinder engine will be brake power minus BP1, which is equals to 3037 minus 2102. 3037 minus 2102. Okay, so this value will be कितना आएगा? 935 किलोवाट. 935 किलोवाट. अरे ऐसे है, देखो ये 100 रुपए दे रहे थे. It is giving the 100 rupees. It is also giving 100 rupees. It is also giving 100 rupees. Let's say it is 200. Okay, it is 400. It is, let's take 500. So how much money you are getting from the all these engine? 300 or 400, 700, 1200. So total indicated power will be 1200. And due to the friction, let's assume 300 will be lost. So though how much will be the brake power? Sir, brake power will be 1200 minus 300 will be the 900. Okay, 300 आपका फ्रिक्शन पावर में चला गया, बाकी कितना बचा? 900. Now what I am going to do?
I'm going to do what I'm going to do, I cut off the supply of this engine. Now how much indicated power you will receive? 200, 400 and 500. 200, 400 and 500. 500 and 400, 900. 900 and 200 is what? 1100. अरे भाई 500, 400, 900. 900 plus 200, 1100. So 1100 is there. 1100 में से 300 frictional power में गया. So how much you will receive here when the first engine will be cut off? 1100 will be there and 300 will be lost due to the friction. You will get what? You will get the brake power 1 will be equals to 800. Initially you are getting the brake power of 900. So what will be the indicated power of this engine? So this will be the difference of this. This will be the difference of this. Yes, I assume this value, these values. Now this is the 100. Okay, this is the 100. Difference of this one. Now what I'm going to do? I'm going to cut off this one. ये मैंने इसको cut off किया. Then how much brake power you will receive? BP2 कितना आएगा? What will be the BP2? Sir, BP2 will be equal to 100 plus 400, 500. 500 plus 500, 1000. 1000 में से 300 frictional power, you will get the 700. And the difference of the 700 and 900 is 200. Same thing I am doing in this. Same thing I am doing in this. First I will calculate the brake power when the all engine are fired. After that I will calculate the brake power when the first engine is not fired. After that I will calculate the brake power when the second engine is not fired. After that third engine. After that fourth engine. And the difference between the brake power and the respective brake power will give the indicated power of that particular engine, because you are not getting that indicated power which engine is not fired, whose cylinder is not fired. So the indicated power 2 will be equals to what? ये क्या होगा बताओ? Yes, what will be the indicated power 2? So this is the brake power minus brake power 2. This is 3037 minus ये आपका कितना हो जाएगा 2102. Again this value will be 935 kilowatt. Now come to the indicated power 3. So this value will be 3037 minus BP3 is 2100. So this value will be equals to what? 937 kilowatt. Similarly, indicated power 4 will be equals to 3037 minus 2098, and this value will be equals to what? 939 kilowatt. 939 kilowatt. So what will be the total indicated power? So this value will be indicated power 1 plus indicated power 2 plus indicated power 3 plus indicated power 4. So what will be the total indicated power, which is the summation of the indicated power of the all cylinders? Yes, indicated power of the all cylinder. ये किसके इक्वल होगा? 3746. I think 3746. So 3746. Yes, total, Chanchal, you are right. So now what will be the mechanical efficiency? Sir, this mechanical efficiency will be the brake power divided by indicated power, which is equals to 3037 divided by 3746. So from this method you can calculate the indicated power of each cylinder as well as the mechanical efficiency without the indicated diagram. I hope this method is clear to you. Where are the other students? So some of the students don't have the patience. कि समझ नहीं आया छोड़ के चले जाते हैं. लेकिन you have to give the time also. टाइम दोगे तभी इंजीनियरिंग आपको समझ आएगा, अदरवाइज इंजीनियरिंग आपसे खुद खेलेगा. वेरी गुड माय डियर, वेरी गुड. सबने कैलकुलेट किया. वेरी गुड. सेम. यस. सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, दोज आर न्यू स्टूडेंट्स, एंड देयर इज अ टेलीग्राम लिंक दे रखा है. आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो उसको ज्वाइन करने के लिए आपके पास पहले से टेलीग्राम ऐप होना चाहिए. ओके माय डियर. नाउ लेट्स कम टू द अनदर मेथड. एक दूसरा मेथड और है, दैट इज योर मोटरिंग टेस्ट. Now if I asking you the limitation of this method, what is the limitation of this method? इस मेथड का लिमिटेशन क्या है ये बताओ.
What is the limitation of this method? Say quickly. It can be used only for multi-cylinder engine. This is the limitation. It can't be used for single cylinder. यहाँ लिख लीजिए. It can't be used for single cylinder. It can't be used for single cylinder. So this is the important thing. It can't be used for the single cylinder. It will be always used for the multi-cylinder engine, either petrol engine or diesel engine. Yes, 81.07. Very good. So the mechanical efficiency is 81.07. I'm writing here 81.07%. 81.07%. Yes, Chanchal, very good, my dear. Okay, so now come to the motoring test. In motoring test, what will we do? It is a very easy. You will tell me इसमें क्या होगा. आप खुद मुझे बता देंगे इसमें क्या होगा. ठीक है. This is your connecting rod, crankshaft, and this crankshaft is connected to the electric motor. This crankshaft is connected to the electric motor. Now what will you do? We will give the electrical current as an input to the motor. This is the motor. We will give the electric current I. So how much power we will give? I square R or VI. Yes, it will be used for the both single and multi-cylinder engine. Yes, this can be used for the single and multi-cylinder engine both. Single and multi-cylinder engine both. Yes. Now what will I do? मैं इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूंगा और इस इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा, बट मैं फ्यूल नहीं डालूंगा. मैं इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूंगा कि ये इंजन बस टेंड्स टू मूव हो जाए. टेंड्स टू मूव. तो इंजन कब मूव करेगा? व्हेन दिस मोटर विल ओवरकम द फ्रिक्शनल पावर ऑफ दिस इंजन. So with the help of the motoring test, you will determine the frictional power. So with the help of the motoring test, what will you do? You will determine the frictional power. You will give input to the motor. And this motor power will be supplied to the engine. This motor power will be supplied to the engine. Okay, electrical energy will be converted into mechanical, and mechanical energy will be converted into the frictional power. So you will determine the frictional power with the help of the motoring test. सबसे easy test है ये. Okay, my dear. Now come to the last test, that is the dynamometer. ठीक है. डायनेमोमीटर में हम टेस्ट करते हैं. डायनेमोमीटर इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो आपके टॉर्क को मेजर करती है. ये किसको मेजर करती है? टॉर्क को. इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ द मोटरिंग टेस्ट. ये मोटरिंग टेस्ट का अपोजिट है. कैसे है देखिए. इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ द मोटरिंग टेस्ट. ये मोटरिंग टेस्ट का अपोजिट है. दिस इज द सिलेंडर, दिस इज द पिस्टन, दिस इज कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, एंड दिस इज द शाफ्ट. This shaft is connected to the dynamometer. This shaft is connected to the dynamometer, which will produce the electricity. And we will measure this electricity, and this will measure the brake power, and this will measure the brake power. So what will the direction of power transfer? This. In this direction of power transmission will be this. So with the help of the motoring test, this mechanical energy will be converted into the electrical energy. Yes, and this electrical energy will be equals to our brake power. ठीक है.
से यस और नो। बिल्कुल प्रभाकर, जैसे आपके घर में जनरेटर होता है, रोटेट टॉर्क, यस यस यस। तो डायनामोमीटर इज बेसिकली a torque measuring device and with the help of this any type of engine can be tested। आपका डीजल भी टेस्ट किया जा सकता है, पेट्रोल भी किया जा सकता है, सिंगल सिलेंडर भी किया जा सकता है, मल्टी सिलेंडर भी किया जा सकता है। तो यहां पर आपका जो टेस्टिंग वाला जो पोर्शन था, इट हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है, इट हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ माय डियर, ये मैंने आपको ISFC भी बता दिया, BSFC भी बता दिया। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन मी ऑन द टेलीग्राम, यू कैन ज्वाइन माय चैनल मैक विशाल। ठीक है, और आप हमारे चैनल्स पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया जा चुका है। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन द अनअकैडमी, देन व्हाट यू हैव टू डू, दीज आर द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। You have to go through the www.unacademy.com. This is the step 1. After that, what you have to do, you have to download the Unacademy learning app. If you are using the laptop and PC, you do not need to download the app. If you are using the Android phone, then you have to download the app. So the Telegram group is showing. आपको उस पर लिंक क्लिक कर देना है, लिंक पर क्लिक कर देना और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। गेट एंड ESE, ठीक है, तो गोल चूज करना है गेट एंड ESE। इसी गोल में हम आपको UPSC AN का कोर्स दे रहे हैं, जिसमें आपका NLC वाइजाग स्टील का जो है एग्जाम वो कवर हो जाएगा। अलोंग विद दिस आपका SSC JN का एग्जाम भी उसमें कवर हो जाएगा। तो एक लाइन में अगर मैं कहूं तो ऑल टेक्निकल एग्जामिनेशन विल बी कवर्ड, ऑल टेक्निकल एग्जामिनेशन विल बी कवर्ड। ठीक है, गोल चूज करने के बाद आपको क्या करना है, गोल चूज करने के बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको टेन्योर चूज करना है कि आपको किस टाइम ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो अगर आप UPSC वाले कोर्स में जाना चाहते हैं ओनली, तो आप 3 मंथ का लीजिए। अगर आप गेट ESE का भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप 12 मंथ का लीजिए। और अगर आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट है तो आप इसका लीजिए। NLC का फॉर्म फिल नहीं करें सूरज, कर देना, अभी भी उसकी लास्ट डेट नहीं निकली है। कल क्या बताने वाले हैं IC इंजन में, दिस विल बी सरप्राइज। कल बताएंगे आपको एबनॉर्मल कंबशन। चलो कल ही बताएंगे आपको कि हम क्या बताएंगे, ठीक है, पहले नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा। तो ये टेन्योर चूज करने के बाद आपको जाना है कंटिन्यू पर और आपको यूज करना है मेरा रेफरल कोड, दैट इज द विशाल 11। जब आप मेरा रेफरल कोड यूज कर लेंगे और इसको अप्लाई कर देंगे तो आपकी जो ये 25,000 फीस है ये रिड्यूस होके ये 22,500 हो जाएगी। मतलब आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। इस कोड को अप्लाई करने के बाद अगर आपके पास कॉइन्स है अनअकैडमी में तो आप उन कॉइन्स को भी रिडीम कर सकते हो। Then you have to finally click on the payment। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। अगर आप पूरी फीस एक साथ पे नहीं कर सकते हैं तो आप EMI के थ्रू भी फी को पे कर सकते हैं। सो दिस विल बी द नो कॉस्ट EMI, नो कॉस्ट EMI। सो यू कैन पे फी विद द नो कॉस्ट EMI विच मीन्स 0% इंटरेस्ट। तो आप अपनी फीस को इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं विद 0% इंटरेस्ट। डेबिट कार्ड के थ्रू भी HDFC बैंक का आप नो कॉस्ट EMI प्लान चूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने डेबिट कार्ड का भी स्टार्ट किया है। तो डेबिट कार्ड का जो आपका HDFC बैंक होता है उसके कार्ड पर हम नो कॉस्ट EMI आपको कोर्स को एसेस करवा सकते हैं। ठीक है गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो गाइस आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और आप जितने भी फेसबुक ग्रुप में जुड़े हुए हैं ये लिंक उन सभी फेसबुक ग्रुप में आपको शेयर करना है। ठीक है, सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। आप जितना शेयर करेंगे, जितने ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे उतने ज्यादा कोर्सेज, उतने ज्यादा डिटेल्ड सब्जेक्ट्स हम लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक एंड बेस्ट ऑफ लक। कल मिलेंगे हमारी इस IC इंजन की क्लास में जिसमें उसका क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। Okay guys, bye bye, take care, stay home, stay safe।